Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session we are going to discuss the valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so let us start the valence shell electron pair repulsion theory. Okay, actually the two scientists suggest the structure of the molecule, the Sedgwick and Powell. First of all, they proposed this simple theory based on the repulsion interaction of the electron pairs in the valence shell. Actually, the Lewis dot structure is unable to explain the exact structure of the molecule. What will be its shape or the structure of a given molecule is not explained with the help of Lewis dot structure. So these two scientists actually helps to find out the exact structure of the molecules, and actually it was based on the electronic repulsion. Actually, electrons are made up of negatively charged particles, and we know that the like charges repel each other, and so according to that they determine the shape of the molecules that it based on the repulsive interaction between the bond pair or the lone pair of the electrons present on the central atom. ओके, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा गया कि किसी मॉलिक्यूल का टेंटेटिव या एक एग्जैक्ट शेप क्या हो सकता है. ठीक है, इसके लिए जो दो साइंटिस्ट थे पॉवेल एंड सेडविक, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेस में सेंट्रल एटम के अराउंड खुद को अरेंज करते हैं, जिससे क्या हो कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो मिनिमाइज हो जाए. और इसके अकॉर्डिंग बाद में दो साइंटिस्ट और थे, नायो एंड गिलेस्पी, they actually developed further and refined the valence shell electron pair repulsion theory. As you consider here a molecule of AB2 type. Here the A can be adjusted like the one bond is B and the other bond is available here P. But see here, if there is no any other electrons present here, in that case the negatively charged electron pairs of the bond pair in case of first bond and in case of second bond, now they try to repel all. The pair of electrons actually are negatively charged particles, so they try to repel each other. Okay, due to the repulsive force, the energy of the system increases and the stability of the system decreases. Actually यहाँ पे जो repulsive force act कर रहा है, इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होने लगती है. तो सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज होगी इस रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है. तो इन्होंने सजेस्ट किया कि the two bonds actually arrange themselves in a space to minimize the repulsive force and maximize the stability. तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये खुद को अरेंज करेंगे. तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है, इट इज लाइक ए बी एंड ए बी. सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉन्ड इज नाउ मैक्सिमम, and due to that there is a minimum repulsive force operate between these two bonds, and so it acquired the given shape, which is what, it is a linear shape having most stable structure with minimum repulsive force and the minimum energy, so the system is more stabilized.
तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये दोनों बॉन्ड्स आपस में रिपल्सन के कारण आपस में रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे से फार डिस्टेंस पे आ गए, और जब फार डिस्टेंस पे आ गए तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमम लगेगा, और जब फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमम होगा तो ये स्टेबल सिस्टम होगा। तो इस तरह से इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसा हो गया, लीनियर हो गया। आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो कि अगर AB3 हो तो मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर इज now the bond angle is 120 degree. It is the most stable structure of the molecule, and in that case it has maximum stability, minimum force of repulsion act between the bond pair electrons. Okay, so according to this valence shell electron pair repulsion theory, the following are the postulates given by Sedgwick and Pearl. Okay, so learn it. The shape of molecules depends on the number of valence shell electron pairs around the central atom. Actually, the shape of the any molecules depends on the number of valence shell electron pairs which are present on the central atom. Okay, now the next, the pair of electrons in valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. Actually, electrons are negatively charged, so the valence shell electron pairs repel each other. Either they are bonded electrons or they are non-bonded, that is lone pair of the electrons. These pairs of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and maximize the distance between them. Actually, this leads to a stabilization of the molecules. Actually, the bond pairs electrons are repel each other in such way that they try to minimize this repulsive force, and for that they occupy such position in a space around the space to minimize the force of repulsion and maximize the stability, that means distance between them. As the distance increases, the repulsive force decreases, and hence they acquire the maximum stability. Now the next, the valence shell is taken as a sphere with electron pairs localized on the spherical surface, maximum distance from one another. Actually, the central atom A has a spherical shape with their electron pairs. Now, the electron pairs repel each other in such a way that they have the maximum distance and minimum repulsive force. Okay, now the next, the repulsive force interaction, that is the order of the repulsive force. Always remember the maximum force operate between lone pair, then lone pair, then bond pair. It is the actually the force of repulsion, and accordingly the shape of the molecule is determined. तो यहां से हम लोग एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल एटम है उस पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं, उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वही एक्चुअली हेल्प कर रहा है कि इनका शेप कैसा हो। एक्चुअली होता क्या है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपस में रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम चार्ज। उनके पास चार्जेस सेम है, एक्चुअली दे ऑल आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दैट दे रिपेल ईच अदर। तो जब उनके बीच रिपल्सन होता है तो इस फोर्स को वो मिनिमाइज करते हैं, दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर रिपल्सिव फोर्सेस, एंड ड्यू टू दैट दे एक्वायर अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द स्फीयर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो अब वो क्या करते हैं, उस स्फेरिकल सेंट्रल एटम पे अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, जिससे उनका रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। एंड द ऑर्डर ऑफ द repulsive force is the maximum between lone pair and lone pair, then it is lone pair and bond pair, then it is bond pair and bond pair. Okay, चलो तो यहां तक नोट करो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें नायलन एंड गिलेस्पी का क्या रोल था, उन्होंने इसमें क्या डेवलपमेंट किया और क्या चेंज किया। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो।
modification of Nyholm and Gillespie. Okay, so here actually they differentiate the differences between the lone pairs, effect of lone pairs and the bond pairs. Actually, so according to their postulation, the lone pairs are localized on the central atom, while the bond pairs shared between the two atoms, and due to that the lone pairs occupies more space as compared to the bond pairs. Actually, they explain that you may see here, for an example, ammonia, nitrogen, hydrogen, hydrogen, hydrogen having a lone pair of electrons. Okay, so here this lone pair is present only on the nitrogen atom, and due to that it occupies more space. But the bond pairs, that means the shared paired electrons between the hydrogen and nitrogen, now it is present on hydrogen as well as on nitrogen, and due to that it is actually shared between the two atoms, so the space occupied by the bond pair is less as compared to the lone pairs. तो यहाँ एक्चुअली उन्होंने पोस्टुलेशन दिया, उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि लोन पेयर्स का जो इफेक्ट है वो बॉन्ड पेयर के इफेक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने इन दोनों के बीच क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया। उन्होंने इनके डिफरेंस को बताया। उन्होंने बताया कि लोन पेयर जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो दोनों एटम्स पे अवेलेबल होगा, और इसलिए लोन पेयर जो है वो क्या करता है, वो ज्यादा स्पेस, मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है, मोर स्पेस को रखता है, और बॉन्ड पेयर्स जो है वो लेस स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, उनका जो शेयरिंग होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। एंड ड्यू टू द above fact, the greater repulsion between lone pair as compared to lone pair, bond pair, and so they explain that the force of repulsion between lone pair is maximum as compared to lone pair and bond pairs, also the bond pairs and the bond pairs. So here the shape of the ammonia is as with lone pair it got pyramidal shape, while in case of water it has two electron pairs, that is the lone pairs, and its shape is bent shape. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो आपको सेम होगा, लेकिन इनका शेप जो है वो डिफरेंट आ रहा है। और इसके पीछे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल लोन पेयर है, यहाँ पे डबल लोन पेयर है, तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो हाई होगा, और इसके कारण ये बेंड शेप हो जाता है, और अमोनिया जो है ये क्या होता है, पिरामिडल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वैसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और जिनके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों अवेलेबल है उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। दैट मीन्स दिस टू कंडीशन हैव डिफरेंट शेप्स, एंड ड्यू टू दैट वी हैव two types of molecules. A molecule which contains only bond pairs have a different shape, different structure, and the molecules having bond pair, lone pair and bond pair have some different structure. Okay, तो first note it down, then we will explain for that. Okay, चलो note करो, तो हम लोग उसको explain करते हैं, उसके बारे में discussion करते हैं। Okay, now the structure, that is the shape of the molecules. Here first we have number of electron pairs, arrangement of electron pairs in space, then molecular geometry and the examples. Okay, so accordingly we explain this all. The first one has number of electron pairs, 2 pair of electrons, and so it is arranged as the central atom with 1 pair of electron and the 1 pair of electron. This have the maximum distance between these two, and so accordingly if the molecule is AB2, so its geometry is linear, AB with bond angle 180 degree, and the example is BCl2 HgCl2. These are the example for the AB2
type molecule. Okay, now the next, if the electron pairs are 3, then in such condition they arrange in a triangular planar shape. Okay, so the molecule have geometry A, B, B and B. तो यहां देख लो, यहां पे बॉन्ड एंगल 180 है, यहां पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है. Here the bond angle is 120. The shape is linear and it is triangular planar. Shape is triangular planar. You may say here the shape is like is triangular planar. Example is BCl3, boron trifluoride, etc. Now the next, when there are 4 number of electron pairs are available, the arrangement of the electron pair is in tetrahedral mode, tetrahedral shape, with the bond angle 109 डिग्री 28 मिनट. यहां ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो एज कंपेयर टू 10928 ग्रेटर लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है. सो द repulsive force is minimum here if the bond angle is 90 degree. At that condition the force of repulsion is greater. So here the structure is tetrahedral, not the square planar. So remember the bond angle is 109 degree 28 minute, and so the accordingly the arrangement of the molecule is as and it is tetrahedral. Bond angle 109 degree 28 minute or 109.5 degree Celsius. Okay, for example CH4 NH4 plus BF4 minus boron tetrafluoride minus CCl4, etc. Okay, now the next, if the lone pairs are, if the electron pairs are actually 5, in that case the arrangement is trigonal bipyramidal. It is triangular and it has bipyramidal arrangement, and so it look like AB5 and the shape is trigonal bipyramidal. This is what? Trigonal bipyramidal. Bond angle here 120 degree and it is the equatorial bond with 90 degree. So here the bond angle is 90 degree and 120 degree. Okay, example PCl5, PF5, PF5, etc. Okay, so note it down, then we will explain the further. यहां तक नोट करो, फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल है उसको देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, the number of electron pairs are 6 and so the arrangement around the central atom is as here, one pair of electron, next pair of electron, then next pair of electron, next pair of electron, next pair of electron,
and the next pair of electron. Here the distance between these all pair of electrons are equal, and so they are octahedral in shape. So it is octahedral with the bond angle 90 degree. Okay, the molecular geometry, it is AB6 type, so arrangement is octahedral B, 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 and the next and the next, and so the arrangement is as a square bipyramidal, rather it is octahedral, okay, with bond angle 90 degree. Example is SF6. Okay, now the next, if the lone pairs number of electron pairs are 7, it is arranged like 1 pair of electron, 2 pair of electron, 3 pair of electron, 4 pair, 5 pair, 6 pair, and 7 pair, and it is pentagonal bipyramidal. It is pentagonal बाइपिरामिडल. तो यहाँ जो शेप है ये स्पेशलाइज्ड है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. आप देख सकते हो पेंटागोन का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री, एंड द परपेंडिकुलर दैट इज द बाइपिरामिडल शेप, एंड द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इज 90 degree. So the bond angle are 72 and 90. It is actually, this lone pair is situated just on the plane perpendicular on A, and the next one is just behind it, and so the shape is like A, B, 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 and the next B, and the next B. This one is just perpendicular on the A, and this one is inwardly, and so accordingly the shape is, तो यहाँ से ये ठीक जो है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसके अकॉर्डिंग दूसरा भी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है. ये बी बॉन्ड जो है ये जस्ट परपेंडिकुलर है, और इस तरह से ये जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री होता है, और इन पेंटागोन्स में जो एंगल होता है वो 72 होता है. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 2 होता है. शेप हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल. एग्जाम्पल हो गया IF7. ठीक है, चलो तो यहां तक नोट करो. तो ये हो गया अरेंजमेंट. अब हम लोग दूसरा सेट देखेंगे जिसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होगा. तो उनका हम लोग देखेंगे कैसे उसकी ज्योमेट्री हो रही है और उसका एग्जैक्ट शेप कैसा बन रहा है. ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं. Okay, now the next, here we have a type of molecules, number of bond pairs, number of lone pairs, arrangement of electron pairs, shape and examples. Actually here we discuss about the molecules which contains lone pairs and bond pairs and their shape. तो यहाँ हम लोग वैसे मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे जिनके पास क्या है, बॉन्ड पेयर अवेलेबल है और उस पे लोन पेयर भी अवेलेबल है सेंट्रल एटम पे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. हमारा पहला टाइप है AB2L. Here the bond pairs are 2 and the one lone pair is also available. So the arrangement of the electrons on the central atom A as one lone pair and 2 bond pairs. You may see here the shape is, you may see here the geometry is the triangular planar. Okay, but due to the lone pair bond pair repulsion, its shape got bent. So here shape is bent shape. An example SO2, O3, etc. Here they have 2 bond pairs and 1 lone pairs, and its shape is look like bent. Actually, when we see the shape of the molecules which contains lone pair, then first cover up the lone pair. Now see the shape is here bent shape. Okay. Now the next, the molecule with AB3L. That means here 3 bond pairs
and one lone pairs are present. Okay, so the arrangement of the lone pair as A, B, B and B. Now you may see here the lone pair bond pair repulsion is maximum, and due to that it got just bent. Bond pair repulsion is operated. Bond pair repulsion is operated, so the molecule has shape like pyramid. So it has pyramidal shape, and it is what? Pyramidal in shape, and the example is NH3. Here the 3 bond pairs and the 1 lone pair are present. So it is the example for the NH3. Here the lone pair bond pair repulsion just decreases the bond angle, as in case of bond angle the tetrahedral molecules, here the molecular geometry is tetrahedral. Here it is trigonal planar, but the actual shape is due to the absence of bond pair. Here lone pair is present, the shape becomes what? Pyramidal. Okay, so here the actual geometry is what? Tetrahedral, but the shape of the molecule get converted into pyramidal shape. Okay, so here in case of tetrahedral the bond angle was 19 degree 28 minutes, but in case of pyramidal now the bond angle just decreases, and the bond angle here it becomes, due to the lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion, it becomes 107 degree, and so it reduces the bond angle from 109 degree 28 minute to 107 degree. So in case of ammonia it is the 107 degree the bond angle. Okay, now the next, it is the AB2L2. The number of bond pairs are 2 and the number of lone pairs are 1. Sorry, it is also 2. It is ABL2. So the number of bond pairs are 2 and lone pairs are also 2. The molecular shape, that means the arrangement of the lone pairs as one lone pair, the other lone pair, and the bond pairs. Here due to the bond pair and lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion, the molecule gets bent. Here you may see that the shape is V shape or bent shape. So here bent shape or V shape molecule. Okay, and the example is H2. Okay, and it is actually due to the lone pair very strong repulsion, and there is lone pair and bond pair repulsion. The bond angle actually reduced to 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था? टेट्राहेड्रल शेप में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इससे रिड्यूस हो जा रहा है. तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर शेप है, और यहाँ पे इन केस ऑफ वाटर इट रिड्यूस टू 104.5 डिग्री. सो बॉन्ड एंगल गेट रिड्यूस्ड. ओके, तो चलो नेक्स्ट यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. Now the next molecular type, it is AB4L, and so here the bond pairs are 4 and the lone pairs are single, and the arrangement of the lone pair around the central atom is, it is as A, a pair of electron, here B, B, B and B. Now you may say here that why we should place the pair of electron at the equatorial position, not on the axial position. If you place the lone pair here, then you may see that the molecule is look like as A bond pairs, bond pairs, bond pairs, here bond pairs, and here lone pair. Now you may see here 1, 2 and 3. That means the bond pair lone pair repulsion are of 3. But in case of here, the number of bond pair
lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion is only to between the equatorial position, not between the axial position. And so due to that, this molecular structure is more stable as compared to this. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन जो है 3 टाइप्स हैं, 1, 2 and 3. Okay, but in case of this combination, only 2 lone pair, bond pair, lone pair are you may see here. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सिर्फ 2 लग रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 3 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी लेस हो रही है और यहाँ पे स्टेबिलिटी मोर हो रही है. सो दिस इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, एंड सो द शेप इज seesaw shape and the example is SF4. Okay, now the next, it is AB3L2. Number of bond pairs are 3 and the number of lone pairs are 2. Now the arrangement of bond pair lone pair around the central atom is as here. It is 2 lone pair at the equatorial position with 1 bond pair, 1 bond pair and 1 bond pair. And so the shape of the molecule is T shape. As if you place the pair of electron at the axial position, then the stability of the molecule gets reduced, while here in case of the placement when the electron pairs are present at the equatorial position, the force of repulsion is minimum and it has maximum stability, and so its shape is actually T shape. But its geometry of these molecules is as the triangular bipyramidal. The example is ClF3, ICl3 and BrF3. These are the examples for the type of the molecule where 3 bond pairs and 2 lone pairs are present. Okay, चलो यहां तक नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Now the next type of molecule, it is AB5L. That means here 5 bond pair and 1 lone pair is present. So number of bond pairs are 5, number of lone pairs are 1. The arrangement of the electron pair is as one pair, next bond pair, here it is lone pair and it is bond pair, and so it look like, you may see here the shape of the molecule is look like a square pyramidal. So its shape is a square pyramidal, and the example for it is boron pentafluoride, BrF5, and the example for it is bromine pentafluoride, it is BrF5. Now the next, it is AB4L2. It has 4 bond pair and 2 lone pairs, and the arrangement of the pair of electron at the axial position, that means it is present at the axis, and so the molecular shape is, it is a square planar. So the shape is square planar, and the example is XeF6, sorry F4.
XeF4। तो यहां से हम लोग देखें तो इसका जो एग्जांपल है XeF4 है, जहां पे क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है बी बॉन्ड जो है यहाँ अवेलेबल है और एक्सियल पोजीशन पे ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट अरेंजमेंट इट इज AB6L and it has 6 bond pair, 1 lone pair, and arrangement is like A, B, 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 and with a pair of electron pair. So this is known as distorted octahedron. The shape is what? Distorted octahedron. Okay, and the example is XeF6. So these are the arrangement of the molecules according to their shape when they contains bond pair as well as lone pairs, and this is the actually valence shell electron pair repulsion theory and its एग्जाम्पल्स। ओके, चलो तो यहां तक नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो यहां तक नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।